गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? बड़ी ऑडियो चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा आज हो सकता है इंटरनेट का इशू आ जाए क्योंकि बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था, इंटरनेट बंद हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर रहेगी, बाकी हम क्या ही कर सकते हैं। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक चल रहा है, चलो शुरू होते हैं। चलो, तो अदर इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे थे हम लोग। ठीक है, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये दिखाना पड़ेगा। ये आपका है इतना बड़ा। तो एक में क्या है कि आपके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, फिर प्राइमरी मिरर है। ठीक है, मिरर क्या करेगा आपका, जो देखो, दो तरीके से मिरर काम कर सकता है। एक तो हीट कैप्चर कर, मतलब हीट कैप्चर कर रहा हूँ कि आ, आपका सोलर एनर्जी के अंदर काम करेगा, उसको एनर्जी देने के लिए। दूसरा क्या करेगा, उसका एनालिसिस करने के लिए। देखो क्या कर रहा है इन्होंने, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी मिरर लगा रखा है यहाँ पे। ठीक है, सोलर एरे, क्राफ्ट सिस्टम, मल्टी लेयर सनशील्ड जिससे जलेना। ठीक है, लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन द स्टडी, लाइट को पढ़ने के लिए, मतलब लाइट को जांचने के लिए, लाइट को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, ये पीछे क्या है, जो जैसे मून का होता है ना कि एक फ्रंट साइड हो, डार्क साइड हो, एक डार्क साइड आना चाहिए। ठीक है, तो अभी इसकी स्पेसिफिकेशंस जो है वो देख लेते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा लार्जेस्ट स्पेस साइंस टेलीस्कोप है एवर कंस्ट्रक्टेड, scheduled to be sent, अभी भेजा नहीं है, into orbit in December. James Webb Space Telescope, it is a space telescope being jointly developed by NASA. ठीक है, NASA, European Space Agency, Canadian Space Agency. It has taken 30 years and $10 billion to develop and is being described as one of the grand scientific endeavor of 21st century. Okay. What is the goal of this telescope? The telescope will be able to see just about anything in the sky. उसके पर्चर बड़ा है इसका, है ना, और anything about 100 to 200 million years after the Big Bang. पहले तो ये है कि भाई will be able to see just about anything in the sky. However, it is one of the overriding objective to see the light coming from the very first star shine in the universe. अच्छा भाई, these pioneer stars are thought to have switched on about 100 to 200 million years after Big Bang, or a little over 13.5 billion years ago. Webb will be picked out grouping of these stars. They are so far away their light, even though it moves at 10 lakh kilometers per second, will have taken billion of years to travel that cosmos. जो हबल टेलीस्कोप था वो एक इंसान से थोड़ा सा बड़ा था, और ये आपका जो जाएगा भी 6.5 मीटर का होगा। One of the most important objective it will carry is a large mirror, जो दिख रहा है, will help collect light from the object being observed. The primary mirror is made of 18 hexagonal shaped mirror segments, each 1.32 meter in diameter, stitched together in a honeycomb pattern. The primary mirror is technological marvel. The lightweight mirror coating
actuators and mechanisms, electronics and thermal blanket, when fully deployed, form a single precise mirror. It truly is remarkable. Each mirror segment weighs approximately 20 kilograms and is made up of beryllium. Why beryllium? NASA explained that beryllium was used as it is both strong and light. Beryllium is very strong for its weight and is good at holding its shape across a range of temperature. Beryllium is a good conductor of electricity and heat and is not magnetic. Because it is light and strong, beryllium is often used to build a part of the supersonic airplanes and the space shuttle. It added that special care was taken when working with beryllium because it is unhealthy to breathe और सोलो बेरिलियम दस ये एक इम्पोर्टेंट बात है इसको देख लेना ठीक है so it does not have gold after the beryllium mirror segment were polished a thin coating of gold was applied to it okay gold helps improve the mirror reflection from infrared light अच्छा the gold was coated using a technique called vacuum vapor deposition. Mirrors are kept inside a vacuum chamber and a small quantity of gold is vaporized and deposits on mirrors. The thickness of gold is just 100 nanometers, so less than 50 grams of gold was used for the entire mirror. A thin layer of glass was deposited on top of the gold layer to protect it from the scratches. बढ़िया था यार मजा आया सुबह की सुबह सुबह कोई अच्छी चीज पढ़ी समझ रहे हो दिन बन गया बहुत अच्छा था इन्होंने तो कुछ नहीं दे रखा था कितना दिमाग खुल गया एकदम इसको क्या ही पढ़ने इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ जो हमने पढ़ना था वहां से पढ़ लिया तुमको भेज दूंगा वो बहुत बढ़िया दे रखा है इन्होंने मजा आ गया ये चलो सनबर्ड अभी क्या है सनबर्ड है अ न्यूक्लियर फिजन पावर्ड रॉकेट could help reach प्लूटो प्लूटो भी जाएंगे भाई साहब सनबर्ड कहाँ जाएगा प्लूटो पे जाएगा डॉर्फ प्लेनेट है just 4 years as per the report. So about Sunbird, a nuclear fusion based rocket developed by the Pulsar Fusion. ये कंपनी का नाम है याद रखना पल्सर फ्यूजन और प्रिंसटन सैटेलाइट सिस्टम यूएसए पावर्ड बाय डुअल डायरेक्ट फ्यूजन ड्राइव टेक्नोलॉजी क्या होती है देखते हैं यूजिंग हीलियम 3 और ड्यूटेरियम अच्छा तो दो फ्यूल यूज कर रहे हैं हीलियम 3 और ड्यूटेरियम generates both thrust and electricity making a voluntary step in interplanetary level तो फ्यूल चेंज कर दिया बेसिकली इन्होंने हीलियम 3 और ड्यूटेरियम का यूज किया वो होता है डुअल डायरेक्ट फ्यूजन ड्राइव इसमें थ्रस्ट भी पैदा होगा जो लिफ्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा होगी जो आपको जरूरत होगी अंदर 3i एटलस नासा फंडेड एटलस एटलस क्या है एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल
इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, ठीक है, लास्ट अलर्ट सिस्टम है। एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट, ओके। सर्वे टेलीस्कोप इन चिले डिस्कवर्ड एन इंटरस्टेलर कॉमेट नेम 3i86। ये एक एक्टिव कॉमेट है। इट इज कैटेगराइज्ड एज एन interstellar because the hyperbolic shape of its orbital path. It does not follow a close orbital path about the Sun. खास नहीं। कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी क्या करा है इन्होंने? Researchers from the Aryabhat Research Institute of Observation Sciences (ARIES) tapped the centuries-old data from Kodaikanal Solar Observatory to reconstruct the Sun's past polar magnetic behavior. Operated by the Indian Institute of Astrophysics and Autonomous Institute of Department of Science and Tech. Plani range of hills in southern India, known for discovery of Evershed effect, is nearly horizontal outflow of gases observed in the penumbra of sunspot in photospheric layer, visible surface of the sun. करो भाई देखो, सूरज देखो। विक्रम वन प्राइम मिनिस्टर जहाँ आ गया तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ही आ गया। Unveiled Vikram 1, which is India's new private orbital class launch vehicle. पहले तो ये हो गया प्राइवेट, फिर ये हो गया ऑर्बिटल क्लास लॉन्च व्हीकल। देख लेते हैं भाई, डेवलपर कौन है? स्काई रूट एरोस्पेस। देखो इसरो विजरो नहीं है, विक्रम वन इसरो का रॉकेट नहीं बनेगा, ठीक है, ये प्राइवेट का है। इसका प्राइवेट है, मतलब कौन सी कंपनी है? स्काई रूट एरोस्पेस। ये पढ़ना पड़ेगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मोदी जी ने खोला है। प्राइवेट इंडियन स्पेस स्टार्टअप बेस्ड इन हैदराबाद to launch satellite in the LEO और SSO, मतलब लोअर ऑर्बिट वाला, समझ रहे हो? 480 किलोमीटर, ठीक है। तो अब जब लियो में जा रहा है तो क्या करेगा ये? सोचो, सोचो। बेसिकली प्राइवेट कंपनी है तो सैटेलाइट छोड़ने नहीं जाएगा यार। डिजाइन टू सर्व स्मॉल सैटेलाइट एंड राइट शेयर मिशन। राइट शेयर मिशन मतलब कि जैसे मान लो रॉकेट जब जा रहा है तो कम से कम 30-40 सैटेलाइट लेके चलेगा अपने साथ में। प्रोपल्शन 4 स्टेज रॉकेट्स, ये 4 स्टेज में होगा। अभी हम 3 स्टेज में देख रहे थे, तो बड़ा रॉकेट है। फर्स्ट 3 स्टेजेस आर सॉलिड स्टेट फ्यूल, फाइनल लिक्विड प्रोपोनेंट, जबकि फाइनल के अंदर जो GSLVs है उसमें आपका सॉलिड स्टेट रखते हैं, पहला लिक्विड होता है, फिर सॉलिड रखते हैं, उसके बाद फाइनल क्रायोजेनिक इंजन जिसको फेस खत्म कर देते हैं, उसमें क्रायोजेनिक यूज नहीं हो रहा। मतलब ये सस्ता रॉकेट है, सस्ता रॉकेट है, रमन इंजन यूज हो रहा है, तो इससे क्या है कि कॉस्टिंग बचेगी इनकी। स्ट्रक्चर द रॉकेट यूजेस ऑल कार्बन फाइबर बॉडी फीचरिंग 3D प्रिंटेड इंजन, कार्बन फाइबर यूज होता है, aiming for lightweight effective design। चलो ऑल द बेस्ट। आ जाओ भाई, बीमारियां पड़ेंगी अब। ट्यूबरक्लोसिस TB। तो ट्यूबरक्लोसिस में क्या है? अकॉर्डिंग टू द WHO ग्लोबल TB रिपोर्ट, इंडियाज TB इंसिडेंस रिड्यूस्ड बाय 21%। ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको मेन के लिए भी रखो, मेन में हेल्थ का एक ऑप्शन आता है पेपर 2 के अंदर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के अंदर भी पूछ सकता है बहुत से, और 21% बहुत बड़ी बात है लिटरली। Contagious airborne disease caused by bacterium called Mycobacterium tuberculosis, ठीक है।
Type based on the site of the infection. Pulmonary TB, most common for affecting the lungs and is contagious, spreading through airborne droplets through coughing and sneezing. Extrapulmonary TB occurs outside the lungs, affecting organs like limbs, nodes, bones, brain, kidneys, or sclera, less contagious and spread within the body from the lungs. Spinal TB, Pott's disease, affects the spine that can cause severe back pain and mobility issues. Type based on response to drug sensitive TB. This form of TB responds well to the standard first line anti-TB medicine such as isoniazid और rifampicin. ये तो रहती है कंट्रोवर्सीज में भी, ठीक है. ड्रग रेजिडेंट टीबी, some form of TB do not respond to standard medicines. Multi-drug resistant form of a TB that does not respond to rifampicin और ये वाली जो भी दवाई, the two most effective drug first line of the TB. Okay. MDR-TB में क्या होता है कि जो होता क्या है कि मान लो एक पेशेंट है, तो पेशेंट दवाई ले रहा है, ठीक है, वो मेडिसिन ले रहा है, बट उसका 2 हफ्ते बाद मन खत्म हो गया कि ठीक है आराम मिल गया, अब ठीक दवाई लेनी बंद कर दी, ठीक है, फिर खांसी शुरू हो गई, अब वो रुक नहीं रही, तो फिर दोबारा से उसने ड्रग्स लेना शुरू किया, फिर ठीक हो गया, फिर छोड़ दी. तो इससे क्या होता है कि वो ड्रग रेजिस्टेंस बन जाती है, ठीक है. जब ड्रग रेजिस्टेंस बन जाती है तो उसको ठीक करना, जितनी बार वो छोड़ेगा कोर्स को उतना ज़्यादा मुश्किल बन जाएगा. अब जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर एक ही ड्रग लिखे, क्योंकि उसको कहेगा यार पहले से सही नहीं होता, चलो दूसरी करता हूँ, तो मल्टी ड्रग्स यूज करेगा, तो हर दवाई के प्रति जो है वो एक रेजिस्टेंस जनरेट हो जाता है. एक ये समस्या है, ये एटीट्यूडनल इशू है कि लोग जो है बेसिकली वो समझते नहीं इन चीज़ों को कि कोर्स को कंप्लीट करना है, ठीक है, कोर्स को कंप्लीट करेंगे एक ही बार में खत्म हो जाएगा, जबकि फ्री है दवाई गवर्नमेंट की तरफ से. एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस XDR-TB, ये और खतरनाक है. इसमें क्या है कि जो स्ट्रोंगर मेडिसिन देगा वो भी काम करना बंद कर देगा, तो ये और ख़राब चीज़ है और ख़राब सिचुएशन. तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस तो पहले शुरुआती है, उसके बाद फिर आपका एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस, ठीक है. अगर वो बन गई तब तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर तो तैयारी मारना खत्म है, ठीक है. अब आ जाओ HIV पे. तो HIV क्या बोलता भाई, US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA अप्रूव द न्यू HIV प्रिवेंशन ड्रग Lenacapavir. ओके, Lenacapavir. तो ये HIV तो भाई बहुत अभी क्योर आया नहीं है इसका, तो देखते क्या है. इट इज अ एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन दैट इज यूज फॉर HIV प्रिवेंशन. मतलब स्टार्टिंग में देने वाले हैं, तभी तो रेट्रोवायरल है. कोविड को जैसे दिया था वो एंटी रेट्रोवायरल थी. एज अ प्री एक्सपोजर, देख लो प्री एक्सपोजर मतलब पहले ही दे देंगे. Prophylaxis or PrEP. It is a medication that can reduce the risk of the HIV infection for individuals who are HIV negative but are at risk of contracting the virus. तो ये प्रिवेंशन के लिए है, मतलब क्योर अभी भी नहीं आया, तो जैसे कोविड का लगा था टीका वैसे लगेगा ये, समझ रहे हो. HIV, a virus that attacks the body immune system and mechanism. HIV damages the immune system by affecting and destroying CD4 cells, a type of white blood cells. Transmission body fluid of the infected person, including blood, breast milk, semen, and vaginal fluid, any kind of fluid. It can help. It can also spread from the mother to the baby. Yes. ठीक है. अगर ब्लड ही
खराब हो गया तो बचेगा ही नहीं ना, बेबी को तो लगेगा ही लगेगा, समझ लो। सीमेन से भी होता है, तभी वो बोलते हैं कि आप जो प्रिवेंटिव स्टार्ट करो, जैसे मान लो आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करो, तो ये सीमेन और वेजाइनल फ्लूइड से बच जाएगा, ठीक है। तो ये रहता है, सबसे ज्यादा ये होता है आपको जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनको क्या हो जाता है, तो जो फॉलो कर रहे हैं उनको हो जाता है। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। इसीलिए भारत सरकार ने रेड बॉक्स लगवाए थे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, ठीक है, इनको रोकने की, और काफी हद तक कामयाबी हुए थे। तो ट्रीटमेंट, HIV कैन बी प्रिवेंटेड एंड ट्रीटेड विद एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ART, याद रखना इसको। अनट्रीटेड HIV कैन प्रोग्रेस एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, खुद से नहीं मरता आदमी इसमें। HIV आपका डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर कर देगा कि कोई भी अगर बीमारी आपको लग गई, नॉर्मल बुखार भी, तो उसमें भी निपट लोगे, क्योंकि अब बॉडी आपको सिक्योर नहीं रख सकती। ये प्रॉब्लम आती है। HIV से कोई नहीं मरता, HIV के बाद जो भी बीमारी लगेगी उससे निपट जाओ, क्योंकि अब कंट्रोल नहीं कर पाएगी बॉडी, आपका डिफेंस सिस्टम कमजोर हो गया, समझ लो। अब आ जाओ ट्रैकोमा। इंडिया was awarded the certificate of elimination of trachoma, चलो बीमारी खत्म कर दी, एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बाई WHO। तो ये पूछा जा सकता है कि ट्रैकोमा डिजीज खत्म हो गई है भारत में से। देखते हैं क्या है। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड द थर्ड साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू हैव एलिमिनेटेड ट्रैकोमा। पहली को नेपाल और म्यांमार है, ओके। साउथ ईस्ट एशियन, वर्ल्ड लीगिंग एन आई डिजीज, ट्रैकोमा क्या है, आई डिजीज है, और बाय द बैक्टीरियम हेलमाइडिया ट्रैकोमाइटिस, इट इज कैरेक्टराइज्ड एज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज। अच्छा, नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज मतलब ये हमारे यहाँ पे मिलती है, ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलती है, समझ रहे हो। वो निगलेक्टेड है मतलब, हाँ ठीक है, देख लो, इसका इम्पैक्ट इरिवर्सिबल होता है, ब्लाइंड हो जाता है आदमी। स्प्रेड पर्सनल कॉन्टैक्ट थ्रू फ्लाइज, जो मक्खियाँ होती हैं उनसे होता है। इंडियन इनिशिएटिव ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम इंटीग्रेटेड अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। तो ट्रैकोमा खत्म हो गया, मुबारक हो, ठीक है। हेपेटाइटिस, ये भी बहुत अलग कहानी है भाई। WHO has classified hepatitis B as a cancer causing, like hepatitis B or C, भैया देख लो। तो B, C और D, BCD तीनों ही आपका कैंसर कॉजिंग हेपेटाइटिस है, ठीक है। Hepatitis D is the incompetent virus that requires hepatitis B for replication. तो हेपेटाइटिस डी अपने आप में नहीं कर पाता था, उसको हेपेटाइटिस बी की जरूरत पड़ती थी कैंसर को बढ़ाने के लिए, ये अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए, मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए। जिसमें हेपेटाइटिस डी ओनली अफेक्ट पीपल हु ऑलरेडी हैव हेपेटाइटिस बी। अगर किसी को हेपेटाइटिस डी है, उसको अफेक्ट तभी करेगा जब उसको हेपेटाइटिस बी भी है, वो रेप्लिकेट तभी हो पाएगा, आइदर साइमल्टेनियसली और सीक्वेंशियली, ठीक है। Hepatitis virus, viral hepatitis A, B, C, D, E are the major cause of acute liver infection. ठीक है. However, only hepatitis B, C, D can lead chronic infections with higher risk of liver cirrhosis, failure or cancer. Vaccine availability. There is no vaccine for hepatitis C. Hepatitis B vaccine provides protection from HPV infection. Heavy show
We show in India's first indigenous hepatitis A vaccine. Heavy show. Oh, भाई monkeypox आ गया. WHO chief says monkeypox outbreak in Africa is no longer a global health emergency. Very good. Virus zoonotic disease caused by the monkeypox. Transmission क्या होता है? To contact with infected people, animal or contaminated object. Symptom क्या है? Fever, headache, muscle ache, fatigue, or swollen lymph nodes. Global concern क्यों था? Declared of public health emergency or international concerns by WHO. There is no proven treatment of the mpox. ठीक है. RT-PCR करना पड़ता है. RT-PCR सुनने में आया होगा. RT-PCR किसमें होता था? कोविड के टाइम पे बहुत किया है. वो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है, HPV, जो भी इन्होंने पढ़ा भी था. तो अब आ जाओ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड HPV किट्स फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग वैलिडेटेड बाय द DBT. देखेंगे a common sexually transmitted infection which can affect the skin, genital areas and throat. So first of all, is sexually transmitted है, तो no on surface, ठीक है. तो in most cases the immune system clear HPV from the body. पता क्या है? HPV की वैक्सीन लगती है पहले, इसमें थर्ड होती है और पुलिस स्टेज में लगवा लेनी चाहिए. 12 से 14 साल की उम्र में लगा लेनी चाहिए, बट लगवाते ही नहीं लोग. HPV के बारे में ज़्यादा किसी को नहीं. मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम लोगों को ही नहीं लगी, समझ रहे हो? तो HPV लगवा लेनी चाहिए थी 12 से 14 के साल में, तो उससे काफ़ी चीज़ें बच जाती हैं, ठीक है. Persistent infection with high risk of HPV can cause abnormal cell development will go on to become cancer. Cervical cancer is the most common type of cancer caused by the HPV. Treatment, there is currently no treatment of HPV. Yes. Preventive वैक्सीन ले सकते हो आप, लेनी चाहिए यार. ये अवेयरनेस नहीं है HPV की. नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025. मेरे ये रंग ओ ये आते हैं कुछ तो पढ़ लेती है. रामस्टल साकागुची PRS SRV RBS 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 नाम रखो. RBS इसमें फिजियोलॉजी और मेडिसिन. RBS डॉक्टर RBS ऐसे लिख लो, इसकी शॉर्टकट होगी डॉक्टर RBS, ठीक है. डॉक्टर RBS. तो R से हो गया रामस्टेल, ठीक है. B से हो गया ब्रंको और S से हो गया साकागुची. तो डॉक्टर RBS डॉक्टर से हो गया मेडिसिन, ठीक है. तो डॉक्टर RBS ये चीज शॉर्टकट होगी, ठीक है. हैव नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर discovery concerning peripheral immune problems. More on the news. Our immune system protects the body from harmful pathogens like viruses, bacteria, and fungi. However, it must also sure not to attack its own cell. This balance is very important for healthy body function. The immune system uses two types of tolerance to achieve this: central tolerance or peripheral tolerance. Okay. Central tolerance क्या है? This process happen in the thymus. एक gland होती है, lymphatic gland system that produce train T cells. T cells क्या है? Type of the white cells. White cells क्या करते हैं? Protect करते हैं body को from the infections. During the training, the thymus remove the self-reactive T cells. Okay. Some of these self-reactive T cells escape from the thymus and enter the body circulation tissue, known as the periphery.
Peripheral tolerance here, peripheral tolerance here. Additional control is needed to prevent the escape self-reactive T cells from attacking the body. ठीक है? Attacking the body. Here, regulatory T cells play a key role. Regulatory T cells identify self-reactive T cells and stop them from attacking our own tissues. In this way, track cells act as a security guard. Role of the FOXP3 gene. Mary Brunclaw गलाई डाउन हो गया डॉक्टर आरबीएस है ना तो डॉक्टर आरबीएस में जो आरबी है वो एक काम के लिए और एस अलग काम के लिए तो डॉक्टर आरबी ने क्या करा है डिस्कवर्ड फॉक्स पी3 जीन which control the development of the function of regulatory T cell. ठीक है if there is mutation in the FOXP3 gene regulatory T cell do not form properly. This can cause a rare autoimmune disease called IPEX, where the immune system attacks the body on tissue. IPEX attack on tissue. Okay. Treatment of the autoimmune diseases. In autoimmune diseases, the body's immune system cells start to attack itself, okay, providing cancer treatment. In cancer, regulatory T cells suppress the activity of immune cells like killer T cells that would otherwise attack the cancer cells. Other applications prevent organ transplant rejection type 1 diabetes. Antimicrobial resistance AMR. World Health Organization released the Global Antibiotic Resistance Surveillance Report 2025. AMR occurs when bacteria, virus, fungi, and parasites evolve to withstand the drug designed to kill them. उन्हीं के साथ ही वो डेवलप कर जाता है मतलब एक तरह से MDR ही समझ लो आगे आ जाओ AMR is a natural process that happen over time through genetic changes in the pathogen. However, its emergence and spread are accelerated due to several anthropogenic factors. Strain of bacteria, viruses, parasites, and fungi that are resistant to the antimicrobial are called a superbug. Spread through the vertical gene transfer during bacterial division and through horizontal gene transfer by exchange of the resistant genes on the microbe. WHO recognized AMR as one of the top 10 global threats. It is often described as a silent pandemic. Key driver of AMR misuse of overuse of antibiotics in humans. Patients frequently self-prescribed antibiotics owing to their over-the-counter availability. Pharmaceutical manufacturing, industrial waste from the production of the active pharmaceutical ingredient for antibiotics, poor waste management, landfill, leachate, untreated wastewater, agriculture and allied sectors, use of microbial in intense farming and livestock sector, healthcare facility, improper management of unused medication, patient excretion and disposal of expired drugs, prematurely discontinued treatment post etc. Fixed, of, fixed dose combination drug. Okay. Central Drug Standard Control Organization has directed all states and UTs to stop manufacture, sale, distribution of 35 approved FDCs. FDCs क्या fixed dose combination drug. FDCs refer to the product containing one or more active ingredients used for particular indications. Active ingredient is a biologically active component of drug product
tablet, capsule, cream, injectables that produce intended effects. FDCs are considered new drugs, okay, when it meets two conditions. कौन सी है भाई ये दो conditions? It combines two or more drugs already approved for individual use in a fixed ratio. It alters the ratio of drugs in already approved FDCs along with making change to its claim. Why FDC drugs are preferred? Better therapeutic outcomes, enhanced synergetic effects between combined drugs when rationally selected, improved patient compliance, reduce the pill burden, reduce cost therapy, combined product many may lower cost compared to the purchasing multiple drugs. कुछ फालतू ही है, ज़्यादा मतलब है नहीं, बस पढ़ लो एक बार निकाल लो नजर से. Regulation of the pharma products in India. Drugs and the Cosmetic Act 1940 and Drugs and the Cosmetic Law 1945 governs import, manufactures, distribution and sale of drugs and cosmetics in India. Central Drug Standard Control Organization (CDSCO) under Director General of the Health Services, Ministry of Health and Family Welfare is National Regulatory Authority of India. Under Drug and Cosmetic Act, it is responsible for approval of drugs, conduct of clinical trials, laying down the standard for drugs, control over the quality of imported drugs in the country. State drug regulatory authorities empowered to grant licenses, conduct inspections and ensure compliance with drug laws at state level. National Pharmaceutical Pricing Authority (NPPA) enforces provision of drugs orders. Good manufacturing practices. Schedule M of drugs cosmetic goods prescribe good manufacturing practices which align with the WHO guidelines. Related news. Raised initiative. Union Health Ministry launched State Health Regulatory Excellence. Raised. A national initiative to benchmark, strengthen state drug regulatory system. About Shresth, proposed by the CDSCU to drive improvement in performance of state direct drug regulatory authorities across India, ensuring drug safety and quality standards are successfully met. ठीक है. सुपर वो नींद आ गई मुझे. मेडिसिन पढ़ाने में क्या पढ़ाऊँ? मेडिसिन कुछ तो समझ में आया, क्या पढ़ाऊँ? कुछ है इन टेक्नोलॉजी. दवाई बन गई, बता दी भाई. खुद नींद आ रही मुझे, लेकिन इसको पढ़ा पाए इतना बोर टॉपिक है. वैक्सीन पे आ जाओ. वैक्सीन जो न्यूज में. मेजर टाइप ऑफ वैक्सीन. Live attenuated vaccines contain weakened like pathogen from bacteria or viruses. The measles, mumps और rubella vaccine. Live attenuated मतलब जो जैसे मान के चल लो, ये कोविड में भी हुआ था. कोविड में क्या हुआ था, जो उसकी वैक्सीन बनी थी उसमें वही आपका कोविड का जो वायरस था वही डाल दिया था वैक्सीन के अंदर, और वो बहुत डाइल्यूटेड था, बहुत वीक था, जिसको हमारी बॉडी आराम से मार सकती है. तो जब वो डाला गया तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जनरेट हुआ, तो जिसको मारा तो समझ में आ गया भाई मारना कैसे बॉडी को, तो उसका इम्यून सिस्टम जनरेट कर दिया, जिससे बाद में लगता भी है तो वो एकदम से सही हो जाए, ज़्यादा प्रॉब्लम ना है. ठीक है. उसके बाद आ जाओ इनएक्टिवेटेड और डेड वैक्सीन. Uses deactivated live pathogen, creating immunity without causing disease. The polio vaccine, influenza vaccine. Subunit or acellular vaccine contain polysaccharides or protein on the surface of the bacteria or viruses. Toxoid vaccine uses inactivated toxins
target the toxic activity created by bacteria rather than targeting the bacteria itself. जैसे DTP वैक्सीन होती है, ठीक है। उसके बाद conjugate vaccine uses two specific parts of pathogen to enhance the immune responses. For example, Zyvac TCV, an indigenously developed typhoid vaccine, or recombinant vaccine, small piece of DNA from the disease-causing bacteria, viruses is used. Hepatitis B vaccine and human papillovirus vaccine. Okay. DNA RNA vaccine. Genetic material, either DNA or RNA, from pathogenic bacteria or virus is introduced into the human cell. HIV vaccine. अब आ जाओ एट फाल की कितनी है ये, बोर हो गया हूँ मैं। वैक्सीन 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 भाई, वैक्सीन खत्म कर देंगे आज, वैक्सीन करके बंद कर देंगे भाई, नींद आ रही है मेरे, दोबारा सोना पड़ जाएगा, इतनी वाहियात टॉपिक है, कराना पड़ रहा है बस। At Palki vaccine, Government of India has licensed private firms to produce the first indigenous multi-stage malaria vaccine. So it's important होगा. At Palki vaccine, तो ये important है. First indigenous multi-stage malaria vaccine है, ठीक है. Vaccine is being developed through ICMR Regional Medical Research Center, Bhubaneswar, and National Institute of Malaria Research in partnership with Department of Biotech, National Institute of Immunology. ठीक है. About at Palki vaccine, dual stage targeting of Plasmodium falciparum, deadliest malaria parasite species. Unlike existing vaccine, RTS SAS01 and R21 matrix that target only one life stage. It target two critical stages in the parasite life cycle. मतलब ये एक तरह से पहले वाली जो वैक्सीन थी वो एक स्टेज को करती थी, ये दो स्टेजेस को करती है, समझ रहे हो? अच्छी बात है भाई, मलेरिया खत्म करोगे। अब ये रिकॉम्बिनेंट शेरेमिक वैक्सीन है। शेरेमिक वैक्सीन refers to a vaccine that combine antigen from the different stages of the parasite life cycle into a single immunogen. ठीक है. About malaria, life-threatening disease caused by the Plasmodium parasite. Malaria mostly spread to the people through bites of, in most, some infected female Anopheles mosquito. 5 Plasmodium species cause malaria in human: P. falciparum, F. P. vivax, P. malaria, P. ovale, P. knowlesi. ठीक है. Oncolytic personalized mRNA vaccine. छोड़ दो भाई. Russia is developing oncolytic vaccine Enteromix personalized M messenger कैंसर वैक्सीन है और कैंसर ट्रीटमेंट. अच्छा, oncolytic कैंसर ट्रीटमेंट. About oncolytic vaccine Enteromix. An oncolytic vaccine uses oncolytic viruses to directly kill cancer cells and stimulate an anti-tumor immune response. Enteromix is based on a combination of 4 non-pathogenic viruses that have the ability to destroy the malignant cells and simultaneously activate the patient's anti-tumor immunity. ठीक है. About the personalized mRNA vaccines. Personalized vaccines based on the genetic analysis of each patient's cancer cells. mRNA vaccines. The vaccines contain a synthetic mRNA strands that encode a specific protein from the viruses. mRNA delivers genetic material and encapsulate in lipid nanoparticle into body to promote
to prompt protein production that match up with part of pathogen called antigens. For example, the mRNA vaccine for COVID-19 directed cells to produce copies of protein on the outside of the coronavirus. हाँ, spike protein होती है ना, वो ऐसा होता है जैसे मान के चलो ये इस तरीके से होता था। तो यहाँ पे जनरेट होता था वो स्पाइक प्रोटीन वायरस के बाहर, ठीक है। Related news: self-amplifying mRNA vaccine. Genova Biopharmaceutical is developing a pioneering self-amplifying mRNA vaccine candidate against the Nipah virus as part of the expanded fund from the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). saRNA vaccine work by giving the body instruction to replicate mRNA needed to create the desired antigen, potentially enhancing the immune response with lower doses compared to existing mRNA vaccines. बेकार है यार, इतना नहीं आता, उतना याद नहीं रहता मुझे। मैं थक गया आयशा, मैं तो थक गया। ठीक है, तो कल करते हैं एनर्जी के साथ भाई। मेरी एनर्जी इन्होंने डिस्चार्ज कर दी है बिल्कुल, ठीक है। एंड आई एम फीलिंग लाइक भाई बस करो ना यार, जब मेरे अंदर से ही आ रहा है कि बस करो यार, तुम लोगों को क्या हो रहा होगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल करते हैं बात। टेक केयर यार, एंजॉय।